Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. We are now today at our fourth Healthcare Insight series. We have our speaker, Mr. Parminder Singh. Do we have Mr. Parminder Singh? Yeah, good afternoon, ma'am. Am I audible and visible? Yes, sir. Yes, Okay. Mr. Parminder, you are audible and visible. I would like to introduce our speaker, Mr. Parminder Singh, who is a graduate in pharmacy and a certified professional coder from American Academy of Professional Coders and certified coding specialist from the Health Information Management Association of Australia. He has 15 plus years of experience in different verticals of revenue cycle management in government and private organizations in India, UAE, and Qatar. I'm very thankful for Mr. Parminder to take out your precious time and give your valuable inputs to this very important topic of today for the revenue cycle management in healthcare BPO. Please, I'm handing over to you. You could share your screen with the presentation and you could start with the webinar series. Meanwhile, I just make a cautious note for everyone. Please be on mute. Don't interrupt the session in between. If you have any queries, please put it in the chat box. We would take it one by one. Thank you so much. Over to you, Okay. Mr. Okay. Good afternoon, all. So, as Madam has given a brief introduction about me, and I'll be just first of all sharing you the slides which we'll be going through today. Just give me 1 minute. Please, can you confirm, is the first slide visible? Yes, it's visible. Please put it in the slideshow. Oh, just one minute. Give me 1 minute. And also, Mr. Parminder, if possible, could you just tilt your camera a little bit down? Yes. Is it okay now? Yeah, it's fine. Okay, now. So 1 minute. Yes, please confirm now. Is it okay? The font size and the first page. Right. Okay then. Okay, so first of all, good afternoon to all of you. Like I have been told to discuss about the role of healthcare BPO in the revenue cycle management. And before I start, I just wanted to have a brief, I would say, introduction or just information that the persons who are attending, do they have any information regarding this BPO or revenue cycle management, or is it a totally new field for them? Do they have any? They are from different domains, like because I need to know like a little bit brief. They have the information, or it's a totally new field for them. The new information which I am sharing. Any of you can new information. Okay, then. So to begin with, and you like me to the mode of communication. Are you comfortable with English or Hindi? That also you can let me know. English, sir. English. Okay, then. So now, what is revenue cycle management? Okay. Now you might have heard about it. Many companies in India also like BPO. BPO is a general term, not only for healthcare. You might be seeing about different verticals where the work is outsourced from US, UK, Australia, right? And in India, it's giving employment to a lot of people. Correct. All metro cities have a lot of BPO companies that you would be knowing also. You would have heard also. Correct. And amongst that BPO sector, one of the BPO we call is HBPO, Healthcare Business Process Outsourcing. Okay. Now, there are many verticals, obviously, but we are specializing in the healthcare BPO operations. Okay. There are n number of US companies, UK companies, right, from different parts of the world who are outsourcing their healthcare business operations to India. And I'll take you to the subsequent slides also that why India is the preferred destination for those countries to outsource their work here. Okay. Now, before we begin,
let us see what is revenue cycle management. Okay, yes, this is a normal definition, but in layman's term, to be very in a simple term means, suppose a patient has gone to a doctor, correct? Example, and you have gone to an Apollo or Fortis hospital, you have gone, right? The doctor over there has seen you, correct? And then assuming that it is cashless, you're not paying anything, okay? Because abroad, everyone has insurance, right? Everyone has insurance, it's mandatory to have insurance, unlike India. So everything is cashless, okay? Now, the patient has gone to a doctor in Apollo or Fortis. He has been seen by the physician and patient goes home. Nothing he pays from his pocket. Okay. Now, it is the responsibility or the duty of the doctor or the hospital to submit his claim to the insurance company and get reimbursed from the insurance company. Okay. In between, patient has no role. Patient has been seen by the doctor of the hospital, Fortis or Apollo, right? He has gone home, taken his medications, whatever doctor has given, he has gone home. Now, at the back end, hospital's job to get the money or reimbursement from the insurance company with which the patient has the insurance card. Okay. So coming to the definition, it's an interaction between healthcare provider. Provider can be a hospital or a doctor, because many big hospitals also are there and some doctors have standalone clinics, correct? Independent clinics are there. So provider in the broader term means a doctor or a hospital and insurance company. So insurance companies in India, if you say ICICI is there, Max is there, Manipal, Cigna is there, right? For example, I'm telling. So insurance company, whichever company's health insurance plan or the health insurance card you are having. So it is just not the payment. Okay, the process starts with the eligibility verification authorization during the patient's schedule of appointment or registration and concludes with the payments and adjustments for the care services delivered. Okay, so this is steps, because before we pay, before the insurance pays, they also want to ensure whether the payment is going to the right patient, whether his insurance plan is active, right? What are his liabilities and what is our liability? So there are a lot of things at the back end which insurance wants to ensure before making payment to that doctor or the hospital. Okay, so this is just a definition. In the next slide, I will show you how the RCM process works. Okay, let us come to the next slide. Now, is the screen visible to all of you? The second slide, anyone of can confirm? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir. now, how does it start? It starts with pre-registration. Okay, see abroad, many places, not only in developed world, Middle Eastern countries also, all developed countries also, wherever we have seen, before the patient has an appointment, 2 days or 3 days before only, the hospital staff or the front office staff or the registration staff will call the patient. Okay, just double checking or confirming that yes, on this, after 2 days, you have an appointment. Okay, checking his name, his address, phone number, email ID, contact information, and also checking whether the health insurance card under which he'll be seen is active or not. Some people will have 2 or 3 health insurance cards also, right? So they will confirm before and okay, you have 3 plans. We are from ICICI also, we are from HDFC also, which health card you want to show to the doctor, correct? And they will check the validity also, for how long it is valid, right? It's expired or not. Then there are some liabilities patient has. Okay, in US or whichever country you say, we call it co-pay and deductible. It means if the fees for the doctor is $100, $20 patient has to pay, $80 insurance will pay. And it is practiced globally. Okay, so with that 20%, what patient is paying is known as co-pay. Okay, then one more service we call is deductible. Deductible means suppose you are taking the annual premium, you're paying annual insurance, health insurance, like what we have for vehicle also, we pay annual for our vehicle, car insurance, bike insurance. Same way, here also insurance, you are paying annual health insurance. If you're working for a corporate, obviously your company will pay. Even you can take personal also. So deductible means suppose in a year you are entitled for 5,000 rupees. Okay, so the insurance plan and the agreement between you is that for the first 400 rupees you need to pay from your pocket. Once you have exhausted your 400 rupees, then only our payment will start.
Okay, so in a year also he has not come. He has just come the month of December 30th. But he will thinking that full year I have not taken any availment, I'll be getting money. No, you have to cross 400 rupees, then only the insurance coverage will start. So that is known as deductible. Okay, so there are certain things, all these things we clarify to the patient at the pre-registration level, so that when he, on the day of appointment, he should not come and have some misunderstanding or fight with the reception staff. Already sick, right? He's not coming for any recreation, he's sick. By that time, before only we have clarified, okay, 20% is your liability for your deductible copay, or $200 you have to pay for your deductible, because in the full year you're not taking any health benefits. So the pre-registration ensures smooth, seamless transaction between the patient and the hospital, because we have notified him beforehand. You understood? This is pre-registration. Now, after 2 days, scheduled appointment, patient has come. Okay, so there are different departments. See, all these 9 fields you are seeing, every department has a job opening. There are some staff who will be dedicated working for pre-registration only, some staff working for registration only. Okay, so all 9 verticals, there are different job openings depending on the person's qualification, right? Experience, okay, which life sciences or non-licensed graduate, for both options are there. Now, next is obviously registration. The front office staff will register the patient on the day of appointment, all manual, and enter the system of his health insurance plan, his card. Maybe he need any special assistance or any sort of immunizations he's having, some sort of alerts. He will notify the reception. I have this allergy, right? I need a wheelchair. So all those things he will notify to the front office staff at the registration. Okay. After everything is done, the patient will be directed to the doctor's room. Okay. Now, in the doctor's room, before that, actually, one more step is there. We call is nursing station. All developed EHR systems have nursing station also. Okay. After that, the reception will send to the nursing station. The nurse will take her vitals, blood pressure, respiration rate, temperature, right? And then she will tell, okay, go to this room number. This room number, wait for your turn. Physician will call you. Now, once the doctor has seen the patient, right, he has to document everything in the system. What diagnosis patient has, what medication he has given, what lab test he has ordered, what procedure he has done, right? And that process of documenting in the electronic health record, we call is charge capture. Okay. Now, once the charge has been captured, it is not that whatever you document, insurance will pay you. Okay. So once parallelly, we also have a term known as utilization review. Okay. Now, utilization review means before you submit, there are certain processes, like there are planned surgeries. Like after 1 week, the patient is undergoing hip replacement surgery or knee replacement surgery or cataract surgery. So we call it pre-approval or pre-certification. Okay. So we will just send a request to the insurance company that after 15 days, I am planning for the surgery, kindly approve my request. So they will also check the information and they will send a written approval. Yes, we are approving your request and you can go ahead with your surgery. Okay, this is known as pre-approval. So there's a dedicated team who works for pre-approval for planned surgeries or planned procedures. Okay, then we have concurrent approval. What is concurrent approval? Patient has met the road traffic accident. Nearest hospital we took him. That time doctor says after evening we have to do surgery. Okay, but before that I want to approval to come. It's a costly procedure. So concurrently insurance will know also, they will approve within 12 hours or 8 hours. They have a timeline. Okay, and third is retrospective review. Retrospective means you have done everything treatment. Later on, you are submitting the approval request because it was an emergency. So all of them 3 are coming under utilization review. So there are auditors, there are specialists. Okay, there are clinical documentation specialists, clinical auditors. Mostly they are life sciences graduates, some PDS, BMS, GMS, right? Or paramedical staff who have the clinical knowledge. They are working for insurance companies as well as for hospitals also, who will be checking the medical necessity for the procedure. Okay, that is known as utilization review. Suppose you send a request for gallbladder surgery as an open approach surgery, right? Now, the insurance auditor has sent you the request back saying this surgery can be done by a laparoscopic approach. Why you want to go for open surgery? Okay, so that claim will, the request will come back. Who is doing this one? This insurance auditor is doing this review and sending you back. It is not that anything I submit, they'll pay me. They also have auditors to check whether it is medically necessary or not.
And laparoscopic surgery is much better for patient than the open surgery, right? Recovery time is faster, hospital stay is less, price wise also is economical, and patient can resume the duty earlier than the laparoscopic surgery. Whereas for open surgery, recovery time is longer, 10 to 12 stitches you require, chances of infection are more. Correct? So they also know, the doctor also knows, the hospital also knows, insurance also knows that there is a cross and check mechanism. Correct? If nobody is there to check you, you can bill anything, right? So they also know we cannot fraudulent claims or simply putting something and getting money. It will not work. Everything has to be rational and it has to be patient friendly, medically justified. So that comes under utilization review. So there are many people who are working in this department of utilization review. Mostly they are from life sciences graduates. I told you BDS, BMS, GMS, BHMS, right? They prefer, the companies are preferring those with those because they need to analyze the medical necessity of the procedures. Okay. Then one more department comes is medical coding. Lots of companies in India. What is the function of medical coder? He will be just going through the report, what doctor has done, or what is the diagnosis, and then assigning the numeric and alphanumeric codes. Okay, so these codes are going to insurance companies. Based on these codes only, the hospital or the doctor is getting reimbursed. Okay, so that coding is a classification. This exam, certification exam is there. Okay, so people in India also, a lot of people who they after graduation they go for the certification exam. 6 months of training is there. After that, you can get certified and enter the medical coding industry. Obviously, training is there, certification is there. Then the job is to review the medical reports, abstract the pertinent signs, symptoms, diagnosis, and procedures, and assign the corresponding codes to the insurance company. Because to the insurance company, documentation does not go, only the patient's demographic information and the procedures and diagnosis codes and the description only goes. Okay, so this is coding. Then nowadays, we will see also what is third-party follow-up. After coding, actually, it is claim submission. Okay, this is, they are put this way. Means you have submitted after the coding, it will go to actually medical billing. Okay, medical billing means they will change this codes into a submissible claim form. Okay, there are different forms. Into this, they'll put the codes, what you have put, what code has put, they'll make in the presentable claim forms to the insurance company. Okay, and then the third-party follow-up means we will study, see in the next slides how the big hospitals, organizations are outsourcing their work to the BPO companies in India, and what all benefits it is offering them financially as well as other benefits it offers. Okay, then we have patient responsibility. So third party means claim has been submitted. Actually, this all function is taken care by the third party nowadays. Okay, now patient responsibility I told you means deductible and copay I discussed. What is the role of the patient? How much percentage he has to pay from the services he has availed? Some can be 20%, some can be 30%, but 70 to 80% insurance will pay. Rest the patient has to pay from his pocket, and that is known as copay or copayment. Okay. After that, once the claim has been submitted, the payment will come to the hospital or the doctor. Along with that, the insurance company will give you a written email as well as message also will come in your phone by EOB. EOB means explanation of benefits. How much request for money you submitted, right? Service, we are paying you 80%. What is the break of that one? And as per insurance agreement with you and the patient, what was the contract? And based on that contract, we are paying you this much. So there'll be in a detailed explanation of to the patient as well as the doctor that how much money has been paid based on what all agreements. And that is known as EOB, explanation of benefits. So everything is transparent here. Nothing is hidden here actually. Okay, everything they will share. Now, these are the different verticals in the part of revenue cycle management. So you can see here, the patient has been from pre-registration to getting money for the hospital or the doctor. These 9 steps are covered under revenue cycle management. And all of them, all these 9 steps I have shown you, each of them has different departments in revenue cycle management, and people who are specializing, who are certified coders, they'll work in coding department, who are medical billers, right? They'll work for claim submission, right? And some people are from commerce background, they can go for pre-registration, registration, correct?
with the medical background, they will go for the charge entry. Okay. Now, next is what is the benefit of revenue cycle management? The benefit is, I'll just summarize what the benefit here. Why the companies are outsourcing to India means because the staff has enhanced accuracy, compliance, claims processing is faster, operational cost is reduced, improved patient satisfaction. Okay, so a 1,000-bed hospital or a 500-bed hospital can outsource their job, right? And then they can focus more on their clinical operations. Otherwise, they need to hire the staff there, give them training, right? So they mostly outsource. What's the benefit here? Because these BPO companies have the skills, expertise, they can scale up, scale down the operations, latest softwares they have, everything they have. Okay, so by outsourcing, the hospitals focus on the clinical operations and they have an agreement with these BPO companies that, okay, we will take care of all your submission processes and ensure maximum payment from the insurance company. So the benefit is streamlined process is done, accuracy and compliance is there. Then you have reduced operational cost and patient satisfaction is there because patient is getting payment on time, right? So he also will be in a good experience he'll have when everything is happening on time. Okay, now the main part. So I just gave you example that why revenue cycle management is outsourced, and among all of them, what is the main thing which we are going to discuss today is the documentation part. Whether it is medical coding, medical scribing, medical transcription, right? And some part of medical billing only, documentation plays a very important role. Okay, because it improves the quality of patient care. Very, very important. Now, let us see now. So what I'll be covering you here is because all of them, coding, billing, scribing, or transcription, the work, the process, the work that is being outsourced to India is based on the documentation, right? All of them are focused on documentation in the electronic health records. So what is this electronic health record? It is like what we have DigiLocker, right? Now DigiLocker is there. You can take your driving license, everything in the system, right? In the digital form. Same way, it is the digital version of the patient's medical record. Okay, everything is digital. Now, what is the benefit of this electronic health record? Let us see this one. See, a few years back, there were paper files, right? Patient records like this one, physical files, which you had a medical records department. From there, the patient has come. The ward boy will bring the file. Doctor will document this physical file, and the file goes back to the medical records department. But the moment electronic health record has come, the access is easy. They have to document as per the standard documentation guidelines. Legibility is not a concern now, right? We know doctors when writing, no one can read. Very difficult. But since they are documenting the system, legibility issues will not be there. Data can be easily abstracted, right? And doctors can share the data amongst themselves, right? Primary care, secondary care, tertiary care, integration is happened. The data sitting at primary care can forward to secondary care hospital. Okay, and all the documentation, they have to follow the documentation standards. Okay, so whichever profile we're doing, your job, what BPO companies are doing, they are basically handling the documentation part. Okay, they are basically handling the documentation based on that only they're working. Okay, and everything is documented in the electronic health records. We call as EHR. Okay, now what are the components of this electronic health record? What are the components that can be documented in this EHR? Anything from patient's profile, his demographics, any allergy he has, any immunization he has taken, right? Or any chronic disease he has, what are the medications he's taking, diabetes, hypertension, dyslipidemia, what are the chronic conditions, how many times. So everything is in the system, right? Unlike physical file, we don't know what is being documented until unless we physically pull out the file. This any doctor can see because it is integrated. In every hospital, duty time changes. Second time he has come to a different doctor, but everything in the system he can easily see. Not a problem for him. Okay, so this is the benefit what electronic health record offers to the patient, doctor, and as such to the healthcare facilities. Okay, so you can let me know in between if someone has any doubt.
Okay, I think let me see the chat box also. Okay, if anything has a doubt, I can. Parminder sir, Yes, Parminder sir, yes, tell if you me. can speak a mixture of both Hindi and English तो ठीक रहे. Okay, that's the reason I asked in the beginning, right? हाँ वो Okay, ठीक है. so I can mix up also. Okay, तो मैं अभी थोड़ा समराइज कर दूं क्विकली आपको. ठीक है, एक बार समराइज कर देता हूँ हिंदी में भी स्टार्टिंग से. तो हमने हमने क्या बोला है कि हमारा जो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट है क्या. डॉक्टर पेशेंट के पास डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास पेशेंट आया और पेशेंट दिखाकर चला गया. उसके बाद जो भी इंश्योरेंस से पैसा लेना है, राइट, जो भी इंश्योरेंस से पैसा लेना है हॉस्पिटल को या डॉक्टर को, वो प्रोसेस को हम रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं. राइट, वो अकेला कन्फाइंड नहीं है कि पेमेंट आएगी, वो इंश्योरेंस भी इंश्योर करेगा कि करेक्ट पेशेंट को करेक्ट अमाउंट जा रहा है कि नहीं. राइट, उसके मैंने बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे टीम काम करते हैं और प्री रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड तक, जब तक हॉस्पिटल को अपना मनी नहीं मिलता, हॉस्पिटल को इन द सेंस मींस ऑब्वियसली रेमिटेंस डॉक्टर को या हॉस्पिटल को मिलना पड़ेगा ना, और बेनिफिट्स पेशेंट को भी इंफॉर्मेशन जाएगी, तब तक ये प्रोसेस था जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में समझाया. और मैंने बोला कि इनकी सभी वर्टिकल्स में जॉब ओपनिंग्स हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन. राइट, वो मैंने आपको डिस्कस स्टेप बाय स्टेप बता दिया था. और बेनिफिट्स क्यों है, क्यों यूएस की कंपनीज और यूके की कंपनीज क्यों आउटसोर्स करती हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल सेट्स है, एक्सपर्टीज है, ट्रेन स्टाफ है. राइट, और अगर आप अपना 500 बेड हॉस्पिटल है, 1000 बेड का हॉस्पिटल है, उनके पास तो इतने क्लिनिकल ऑपरेशंस को हैंडल करना है, तो वो अपना क्लिनिकल ऑपरेशंस को फोकस करते हैं. ये सब रेवेन्यू साइकिल का जो पैसा आना है इंश्योरेंस कंपनी से, प्री ऑथराइजेशन चेकिंग करना, वो सब थर्ड पार्टी कंपनी फॉलो करेगी. ये उनको बोल देंगे हम आपको इतने क्लेम्स का 90% 95% आपको अमाउंट आपको मिल जाएगा हर महीने. हम वो हमारी हेडेक है. ऑब्वियसली एग्रीमेंट रहेगा उनके साथ, क्योंकि इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रेन स्टाफ है, गाइडलाइंस की नॉलेज है, राइट, ऑटोमेशन का यूज करते हैं. तो ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, हॉस्पिटल का रेवेन्यू बढ़ता है. अगर वो खुद से ट्रेन करेंगे स्टाफ को, उतना वर्क स्पेस लेना पड़ेगा, उतने स्टाफ की ट्रेनिंग चाहिए, उतना सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, वो कॉस्टली पड़ता है हॉस्पिटल्स को. राइट, तो जो बीपीओ कंपनी से 3-3 4-4 हॉस्पिटल्स का ऑपरेशन हैंडल करती है, तो इनके पास स्केल अप स्केल डाउन की भी फैसिलिटीज होती है. राइट, क्योंकि इनका वेल वर्स्ड वो सिस्टम्स है इन प्लेस. ओके, तो इसका ये बेनिफिट्स है क्यों आउटसोर्स होता है. और मैं बोल रहा था, चाहे आप मेडिकल कोडिंग बोल रहे हो, मेडिकल स्क्राइबिंग बोल रहे हो, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हो, इन सब का जो बेस है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आधार करता है. राइट, तो आपको बेसिकली मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही कोड्स डालने हैं या एब्स्ट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, तो इसके रिलेटेड ही हमारे पास आउटसोर्सिंग जॉब्स आती हैं इंडिया में. ठीक है, और ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. जो डॉक्यूमेंटेशन आपको आता है, आपको एक्सेस मिलेगा ऑब्वियसली ट्रेनिंग के बाद, तो आप इस पे काम करते हो. और पहले होता था कुछ 10-15 साल पहले फिजिकल फाइल्स होती थी हमारे हॉस्पिटल्स में भी. अब जब इंटीग्रेट हो गया है, सब कुछ सिस्टम्स में आ गया है. ईएचआर बोलते हैं हम इसको, मतलब ग्लोबल बता रहा हूँ मैं, ग्लोबली अब ईएचआर स्लोली माइग्रेट हो रहा है. इसके बेनिफिट्स बहुत मैनीफोल्ड है. राइट, तो एक तो मैंने ये बताया कि बेनिफिट्स क्या क्या है इसके. एक्सेस इजी है, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेजिबिलिटी इश्यूज नहीं है. करेक्ट, जब डॉक्टर डॉक्यूमेंट कर रहा है डोसेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ लेजिबिलिटी है इसमें. फिजिकल फाइल तो आपको पता है डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़ना कितना मुश्किल होता है. कितनी बार नर्स को और फार्मासिस्ट को कॉल करना पड़ता है डॉक्टर को, डॉक्टर आपने कितनी डोसेज लिखी है, क्या सॉल्ट लिखा है, क्योंकि लेजिबिलिटी इश्यूज आते हैं. वो सब चीज यहाँ पर नहीं आएंगी ईएचआर में. करेक्ट, और कम्युनिकेशन, अगर किसी ने एमआरआई कराई है, उसको सेकंड ओपिनियन लेना है, राइट, सिस्टम से डाउनलोड की रिपोर्ट पीडीएफ अटैच की, सेकंड डॉक्टर को भेज दी. करेक्ट, तो वो सब बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के. डॉक्टर्स आपस से सेकंड ओपिनियन कम्युनिकेट करके भी ले सकते हैं. तो ये सब बेनिफिट्स ऑफर करता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. अब उसके कंपोनेंट्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के. 3 कंपोनेंट्स हैं. हम बोलते हैं क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर एंट्री, और हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ऐसे रहेंगे, आपको फोटो नजर आ रहा है, कई बार ऐसे होता है कि ये हम यहाँ पर थे, राइट, कंपोनेंट्स. उसके बाद पहला पढ़ लेते हैं क्या है. कई बार डॉक्टर के माइंड में कंफ्यूजन होता है, 3-4 बीमारियों को वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस रूल आउट नहीं कर पा रहा है. ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है, या पल्मोनरी एडिमा भी है, या निमोनिया भी है, तो उसको डाउट होता है क्योंकि पेशेंट को इतनी बीमारियां हैं. सो ये सिस्टम्स डॉक्टर को बेस्ट क्लिनिकल सजेशन प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सपोर्ट. जो भी ग्लोबली इस बीमारी के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, वो ये सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता है डॉक्टर को कि इस बीमारी के लिए ये वाला बेस्ट, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस ग्लोबली, ये बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इस पेशेंट के लिए.
बाकी डॉक्टर की मर्जी है, वो उसको ऑप्शन ही वांट टू टेक और नॉट टेक, दैट्स डॉक्टर डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये एक फिजिशियन को एक सपोर्ट देता है, एक राय देता है, हाँ मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और इवन नर्सेस को भी और फिजिशियन दोनों को ये अपना सुझाव देता है कि इस बीमारी के लिए ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। ओके, ये बेनिफिट है EHR का। ओके, काफी किस्से आते हैं हॉस्पिटल में, कॉम्प्लेक्स केस होते हैं ना, तो ये एक सपोर्ट दे रहा है डॉक्टर को। दूसरा है इसके अंदर फंक्शंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल केसेस के लिए ये एक सुझाव देता है सिस्टम, सॉफ्टवेयर है बेसिकली, राइट। जहां भी गलत मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की उसको भी मॉनिटर करता है, ये अलर्ट डालेगा सिस्टम में, अलर्ट आ जाएगा कि रॉन्ग मेडिकेशन, रॉन्ग डोज, बच्चे को बड़ी की डोज दे रहे हो आप, राइट, अलर्ट आ जाएगा सिस्टम में, राइट। और डुप्लीकेट या अननेसेसरी टेस्ट को अवॉइड करता है। आपको पता है लिपिड प्रोफाइल हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, 90 डेज से पहले नहीं कर सकते। ओके, अगर आपके पास ये सिस्टम है तो अलर्ट आ जाएगा कि अभी लिपिड फाइल आपने 2 महीने पहले किया है, दोबारा से ऑर्डर मत करो, करेक्ट। अगर फिजिकल फाइल में ये सब चीज अलर्ट नहीं आएंगे आपके पास, तो ये बहुत, जब आप काम करते हो तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं। अननेसेसरी टेस्ट, डुप्लीकेट टेस्ट आप अवॉइड कर सकते हो जब आपके पास सिस्टम में अलर्ट आ गया, ठीक है। और डॉक्टर को ट्रीटमेंट प्लान्स हो गया, प्रोसेस स्टैंडर्ड गार्ड उसके रूल्स के हिसाब से वो प्लान कर सकता है, और बताएगा कि बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, राइट। हर एक एसोसिएशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, राइट, वो उसके स्टैंडर्ड मापदंड के हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा, एज पर दिस प्रैक्टिस ये सोल्यूशन है आपका, इसको फॉलो करो, राइट। पॉपुलेशन बेस्ड मैनेजमेंट की, किसी की डोसेज को एडजस्ट करना, रॉन्ग एरर हो गया प्रिस्क्रिप्शन में, वो सब ये आपको अलर्ट करता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, किसी पेशेंट को एलर्जी के लिए कि हाँ ये दोगे तो इसको एलर्जी हो सकती है, ऑलरेडी ये मेडिकेशन ले रहा है, वो सिस्टम बैकएंड में कैलकुलेट कर लेगा, ये शुगर की दवाई ले रहा है, इफ यू पुट दिस आल्सो एलर्जी कैन हैपन। तो ये सिस्टम्स के बेनिफिट्स हैं EHR के, कि जो सॉफ्टवेयर ही है इतना हेल्प करता है डॉक्टर को अराइविंग एट ए करेक्ट डिसीजन, ताकि वो अनफोर्स एरर्स और दवाई के एरर, टेस्ट के एरर वो ना करे। मतलब अलर्ट्स आते हैं, पॉपअप आएंगे सिस्टम्स में जब वो डॉक्यूमेंट करेंगे डॉक्टर्स। ओके, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा, ये तो रिसर्च किया कि जैसे ही इन्होंने EHR यूज किया हॉस्पिटल्स ने, पेशेंट की कंप्लायंस बढ़ गई। जो वैक्सीनेशन नहीं ले रहे थे, 35 से 50% तक वैक्सीनेशन की जो पेशेंट्स ले रहे वो बढ़ गया, राइट। पेशेंट्स को रिमाइंडर जा रहे हैं सिस्टम से, आपको फोन में रिमाइंडर जाएगा, मैसेज आएगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड रहेगा, ईमेल में मैसेज आएगा। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के। सेकंड आ गया कि आप डॉक्टर अपने रूम में बैठे बैठे ड्रग का ऑर्डर, लैब का ऑर्डर, रेडियोलॉजी का ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो आपको सिंपल फार्मेसी में जाना है, फार्मासिस्ट के ऑलरेडी स्क्रीन में ऑर्डर आ जाएगा, वो दवाई तब तक रेडी रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर ने ऑर्डर डाल दिया, राइट। डॉक्टर फोन कर देगा मैंने ऑर्डर डाल दिया, इस पेशेंट की दवाई रेडी रखो, 10 मिनट में आ रहा है। तो जब आप जाओगे, आपकी मेडिसिन पेशेंट, मतलब डॉक्टर पेशेंट फार्मासिस्ट को मालूम है ये पेशेंट की ये मेडिसिन देखनी है, स्टैंड बाय में रखेगा, ऑब्वियसली आपको चेक करके डेटा आपका आपको मेडिकल डिस्पेंस कर देगा। For lab also, radiology also, doctor will place the order in the system and you have to just go there, आपका टेस्ट किया घर आ गया, राइट। इतना बेनिफिट है इसका सिस्टम में बैठे बैठे। ये नहीं डॉक्टर जा रहा लैब में या रेडियोलॉजी में जा रहा है या फार्मेसी में जा रहा है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या है, जब सिस्टम में आप ऑर्डर कर रहा है फिजिशियन, कोई भी डॉक्टर की लेजिबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे। वो मेडिकल फील्ड में वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। गलत दवाई नहीं लाएंगे, कोई अनक्लियर टेलीफोन ऑर्डर्स पे नहीं होगा। जब बड़े हॉस्पिटल 1000 बेड का, काफी मिक्सिंग होती है प्रिस्क्रिप्शंस की, दैट विल नॉट हैपन नाउ, राइट। और नर्सेस को और फार्मेसी स्टाफ को बार बार डॉक्टर को तंग नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनको रेडीमेड क्लियर डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, कितने मिलीग्राम, कितनी फ्रीक्वेंसी, सब उसमें ऑप्शन आते हैं सॉफ्टवेयर में, राइट। TID BID ऐसे ऑप्शन आएंगी। सो ये सब चीजें कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर एंट्री से, ये सारी रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन या रॉन्ग हैंड राइटिंग या करेक्ट फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वो एलिमिनेट हो जाती है। ये इतना बेनिफिट है ये, ओके। अब हम बोलते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, ये हेल्थ हॉस्पिटल मैनेज सिस्टम का क्यों हिस्सा होना चाहिए। ओके, भाई दिस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बड़े बड़े हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। एक तो आप डिजिटली ट्रैक कर सकते हो पेशेंट्स को, राइट। दूसरा, अक्रॉस हॉस्पिटल्स पेशेंट का डेटा शेयर कर सकते हो, पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ती है और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डॉक्टर की ऑब्वियसली प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ये सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जो भी बड़े हॉस्पिटल इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इन केस यू फील कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, यू कैन स्टॉप मी, नॉट ए प्रॉब्लम, मैं समझा सकता हूँ आपको। उसके बाद आ गया रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है। आई जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर क्लास टाइम फोन उठता है। ओके 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 ओके। तो अभी रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट क्या क्या है, ये फैसिलिटी रेवेन्यूज इंक्रीज करता है,
प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। बेसिकली क्या है, रेवेन्यू साइकिल आपका बढ़ता है, राइट। ये सिंपल वो नहीं हो। अब आउटसोर्स क्यों करते हैं, वो आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं आरसीएम को, कॉस्ट सेविंग होती है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की। हमारे पास ट्रेन स्टाफ होता है इंडिया में जो कि इसको हैंडल कर सकता है, राइट। ट्रेन कोडर्स हैं, सर्टिफाइड कोडर्स हैं, राइट। उसके बाद हम इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का वर्कलोड है हमारे पास, राइट। और जो मेन हॉस्पिटल्स हैं उनको ये बिलिंग, क्लेम प्रोसेसिंग, कलेक्शन, कोडिंग या डिनायल मैनेजमेंट, रीसबमिशन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। और जितनी बीपीओ कंपनीज इंडिया में उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, एनालिटिक्स है, डेटा टीम है, सो डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स हैं। ये सारा बेनिफिट्स हैं जो कि आरसीएम ऑफर करता है। इसीलिए वो कंपनीज इंडिया में काम आउटसोर्स करती हैं। ओके, ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं बेसिकली। और कुछ एक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 1000 से लेकर 2000 पेशेंट्स की ओपीडी होती है एक एक हॉस्पिटल्स में, राइट। आप सोचो कितना वॉल्यूम है, एक ही एरिया में अगर 10 हॉस्पिटल तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा। तो लार्ज वॉल्यूम हैंडल करते हैं बड़ी बड़ी बीपीओ कंपनीज। ओके, और हर एक क्लेम को कोर्ट जाना ही जाना है, तभी पेमेंट आएगी। आप समझ रहे हो। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करती हैं बड़ी बड़ी बीपीओ कंपनीज। ओके, क्योंकि ह्यूमन का है ना। और मेडिकल कोडिंग के बारे में बता रहा हूँ, मेडिकल कोडिंग कुछ नहीं है, सिंपलीफाई लैंग्वेज में डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, राइट, एक डायग्नोसिस लिखा, जैसे उसको फेरेंजाइटिस हो गया या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। ओके, तो वो जो थ्रोट इन्फेक्शन है उसका एक कोड आएगा, हम कोड डालेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, उस कोड के आधार पर हमें पेमेंट मिलेगी। ओके, ये सिंपल लैंग्वेज में कोडिंग ये है। आपने रिपोर्ट पढ़कर उसमें से कौन सा सिम्टम था, साइंस था, राइट, और क्या डायग्नोसिस किया या क्या प्रोसीजर किया, उसको हमने कोड के द्वारा वी हैव टू सबमिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बेस्ड ऑन दैट कोड्स असाइंड, इंश्योरेंस कंपनी विल पे टू द डॉक्टर और द हॉस्पिटल। ओके, और इसके लिए आपको थोड़ी मेडिकल नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़नी है आपने। ओके, अब इसका भी सेम चीज है, आरसीएम कैसे बेनिफिट मेडिकल कोडिंग में, क्यों आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सर्टिफाइड ट्रेन कोडर्स हैं। मैक्सिमम हम रीइंबर्समेंट करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, एरर रेट बहुत कम है, ऑडिटर्स हैं, राइट। तो हर लेवल पे चेकिंग होती है और कंप्लायंस फॉलो करते हैं, इसलिए रेवेन्यू साइकिल ज्यादा आता है। इसलिए बाहर की कंपनीज या हॉस्पिटल्स इंडिया में आउटसोर्स करते हैं मेडिकल कोडिंग का, बिलिंग का, रिसबमिशन का, डिनाइल्स का, उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। ओके, अब इंडिया में क्यों देते हैं वो, ऑब्वियसली कॉस्ट वाइज एफिशिएंट है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, लार्ज पॉपुलेशन है, हमारे पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है हमारे पास, आईटी आपको मालूम है इंडिया का कितना स्ट्रांग है, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, ओवरलैपिंग शिफ्ट्स भी चलती हैं, टाइम जोन का एडवांटेज यूएस को लेकर, राइट, वहां दिन है यहाँ रात है, यहाँ रात है वहां दिन है, रेगुलेटरी नॉलेज है। लेकिन कोडिंग में नाइट ड्यूटीज नहीं होती, डेट शिफ्ट ही होती है, लेकिन कुछ एक प्रोसेस में नाइट भी होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया है क्या क्या प्रोसेस आउटसोर्स होते हैं एचपीपीओ में, मेडिकल कोडिंग का प्रोसेस, मेडिकल बिलिंग का, और टेली हेल्थ या टेली मेडिसिन भी बोलते हैं, टेली हेल्थ, यहां से हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंडिया से। ओके, अब उसके बाद आ गया है टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज हो रही है। हमारे पास टेली मेडिसिन है, ये रिमोट एक्सेस है, जैसे कि लोग अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं डिवाइस डालकर, पल्स ऑक्सीमीटर चेक कर रहे हैं, राइट, बाद में डॉक्टर को नोटिफाई कर रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं बीपीओ के। तो हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। टेलीमेडिसिन कोरोना टाइम काफी यूज हुआ, वर्चुअल रियलिटी में आपको स्टिमुलेट करेंगे, जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट देखना चाहता है कैसे लगता है, तो वो फोटो वो डालकर दे कैन विजुलाइज सिमुलेशन। एआई आपको पता ही है, पेशेंट अपना एक वो डाल रहा है, ईसीजी चेक कर रहा है या ब्लड शुगर चेक करके डॉक्टर को रिपोर्ट कर रहा है, उसके डिवाइस डाल दिया, हॉल्टर मॉनिटर डाल दिया या ग्लूकोमीटर डाल लिया, तो वो टेस्ट करके रिपोर्ट बता रहा है डॉक्टर्स को। तो बिग डेटा मीन्स लार्ज इंफॉर्मेशन गैदर करके हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन दे। ओके, ये सर थोड़ा एडवांस ट्रेंड्स है, जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ वर्टिकल्स में ओपनिंग आ सकती है। ओके, अब हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मीन्स आप अक्रॉस हॉस्पिटल्स डेटा शेयर कर सकते हो। ओके, अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स डेटा कैन बी शेयर्ड, और उससे पेशेंट का भी टाइम बचता है, डुप्लीकेट टेस्ट नहीं करना पड़ता, राइट, और हम सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल या डिफरेंट कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट। फिजिकल फाइल में तो ऐसा नहीं कर पाओगे ना आप, ये बैठे बैठे डाउनलोड किया, साइन कर दिया। ओके, हेल्थ केयर रिकॉर्ड डेटा। तो यही बेनिफिट है कि आप रियल टाइम डेटा पेशेंट का शेयर कर सकते हो अक्रॉस फैसिलिटीज, अक्रॉस डॉक्टर्स, कॉस्टली रेपिटेटिव टेस्ट को इग्नोर कर सकते हो, राइट। और बेसिकली इट इज कॉस्ट सेविंग फॉर हॉस्पिटल ऑल्सो एंड फॉर पेशेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड।
करेक्ट। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, इसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उसको तो पैक्स, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या है, पहले होता था कि यू टेक एक्सरे, फिल्म लिखो, नाउ एवरीथिंग इज सिस्टम। जैसे इमेज ली वो सिस्टम में स्टोर हो गई, यू कैन जूम इन जूम आउट, राइट, और उसको कोई लॉस होने का डर नहीं है। इट कैन बी परमानेंटली स्टोर्ड, एवर एवर, मतलब उसको कभी लॉस होगा ही नहीं, वो सिस्टम में रहेगी रिपोजिटरी की तरह। एंड इट हैज ए मच बेटर रेजोल्यूशन ऑफ योर CT, MRI, X-ray, ultrasound, everything in the system only. This is the benefit of EHR. ओके, फिजिकल उसका नहीं है, फिल्म का कहीं खराब हो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है, वैसा नहीं है। ठीक है, दैट्स अनदर बेनिफिट ऑफ EHR कि एक्सरे आपके ऑल अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी इट इज इन द सिस्टम एंड इट कैन बी शेयर अक्रॉस ग्लोबली, कहीं भी शेयर कर दो आप इसको। फिर आ गया बार कोडिंग। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे स्कैनर है, जैसे आप देखते होंगे, व्हेन दे पुट इट, कौन सा पेशेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है इसके अंदर। ओके, और ऑप्टिकल स्कैनर की तरह है, जो भी इंफॉर्मेशन एनकोडेड है इट विल कंफर्म। ओके, हेलो हेलो, ओके ओके ओके। देन अब आ गया हमारा, ये है ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन, और आ गया इलेक्ट्रॉनिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स में क्या है, यहाँ से आप पेशेंट का नेम और मेडिकेशन कौन सी ले रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो आप। ओके, और अभी इसका जो फोकस फ्यूचर क्या है, इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 9% है अभी। नेक्स्ट 2030 तक जो उसका ग्रोथ है ना, जो प्रोजेक्शन है 2030 तक, अभी तो $300 की इंडस्ट्री, अभी $350 समथिंग, लेकिन बाय 2032 ये $864 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। तो इसका मतलब डिफरेंट वर्टिकल्स में ओपनिंग्स नेक्स्ट, आप सोच सकते हो नेक्स्ट 8 to 10 years आनी ही आनी है। इट्स एन एमर्जिंग फील्ड, एवरग्रीन फील्ड, क्योंकि मेडिकल फील्ड है ये। AI आने के बावजूद भी इसमें वेरी गुड स्कोप है। ओके, so this was a brief introduction about the revenue cycle management और BPO के operations कैसे चलते हैं। Okay, so I am done with this one. If you have any questions, you can ask. सर RCM का थोड़ा, RCM का फुल फॉर्म है रेवेन्यू साइकिल नहीं नहीं मैनेजमेंट। सर, फुल फॉर्म है, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन में समझा, हम लोग छूट गया था सर। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट का मतलब है, आपको सिंपल जी लैंग्वेज में, कि जी जी आप डॉक्टर के पास जब जाते हो, राइट, तो आपने जी जी ट्रीटमेंट लिया, आप घर चल गए, क्योंकि जी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, करेक्ट, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, आपने ट्रीटमेंट लिया, आप घर चले गए, लेकिन जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटल को आना है, वो पैसा कौन, वो प्रोसेस किसके प्रोसेस के थ्रू आएगा, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के प्रोसेस के द्वारा डॉक्टर को पैसा मिलेगा या हॉस्पिटल को पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। समझिए अच्छा आप, मतलब, क्योंकि वहां सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान रहता है, कोई पेशेंट पेमेंट नहीं करता, जो भी पैसा मिलेगा जी हॉस्पिटल के डॉक्टर को वो इंश्योरेंस से मिलेगा। लेकिन वो जो कौन इंश्योर करता है कि वो पैसा उसको मिल जाए टाइम पर, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट प्रोसेस। जी जी इसमें सर। अलग अलग पीपल काम करते हैं, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, राइट, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करके इंश्योर करते हैं एंड ऑफ द डे डॉक्टर को या हॉस्पिटल को अपना पैसा मिल जाए। समझ गए आप? जी सर। ओके, तो दिस इज डन नाउ, एनीथिंग नाउ आई सर एक और, थिंक। सर चार्ज कैप्चर में क्या बताए थे? चार्ज कैप्चर में जो भी डॉक्टर डॉक्यूमेंट करता है पेशेंट को क्या बीमारी है, जी जी राइट, या क्या प्रोसीजर जी किया है, वो डॉक्यूमेंट करता है चार्ज कैप्चर में। सो आई थिंक इट्स डन फॉर माय पार्ट। Thank किसको you, बोले? Mr. Parminder. You could stop यस, sharing your screen, and ओके, if people have any questions to ask from Mr. Parminder, you could post your questions on the chat box. Meanwhile, we have a poll for everyone to take a feedback that what have you understood during this webinar? क्या आप समझे हैं इस webinar में? उसके लिए एक हमारे पास poll है. That's a very interesting thing. Please answer these poll questions. I think so poll सबको visible होगा. जी 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 मैम। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या आंसर निकलता है और कितने लोग करेक्ट आंसर दे पाते हैं. प्लीज स्टार्ट.
Please mute yourself, everyone. Please hurry up, participate maximally. We will end the poll in another 2 minutes, so please expedite. अब जा सकते हैं मैम। So we are ending the poll. 5, 4, कर दिए मैम। 3, 2, 1. The questions were, which is not a function in the claims process? Mr. Parminder? Yes. So lending So of funds maximum is not. people have answered coding and the lending of funds. Both have the same answer. No, the answer is lending of funds. Claims तो अभी हम we discussed, right? Without coding, the claim will not go to insurance company. Courts, with the help of courts only, the insurance is paying you, right? So if you don't put a codes, money will not come. So coding is the part of the process. Denial also, if denial has come, that is also part of the claims process. Reimbursement means पैसा आ रहा है. Lending of funds means चीज को उधार दे रहे हो. That is not the answer. That's the wrong one. The last is the wrong one. So second question was, what does EHR stands for? And everybody yes. have given the answer, electronic health record, maximum. Yes, correct. I think so It's that's correct. Correct. very good.
How does accurate data entry impact patient care? Maximum people answered all of the above. It ensures the patients are billed Yes, correctly. it's correct. It helps maintain accurate patient records. It reduces billings related stress for patients. Correct. Very good. Expand RCM. Maximum people answered revenue cycle management, and they are, I think so, right? Yes, they're right. And the last question was the process of electronically capturing information encoded on a product using optical scanner is called, and maximum people answered bar coding followed by electronic coding. So what is the It's right correct. answer? Barcoding is correct. Yes. Very good. So every maximum people have answered correctly. So hopefully everybody has understood it correctly. Last, I just request my team to put up the last slides for everyone to give you the contact information that where you all could contact us if you have any further queries. Just give us 1 minute. अब क्या चल रहा है? So these are our contact information. Everybody can contact us. This is our website, Facebook, Instagram, LinkedIn accounts, and the email IDs of me and my teammate, and the general email ID of the Healthcare HSSC. The next slide, please. And this is our upcoming webinar. Ma'am. Ma'am, it's not showing. Please. Okay. Could you just stop sharing and share again? जाए मैम? आप बिल्कुल जा सकते हैं, बस ये हमारी contact details हैं. If you want to take the screenshot and the photo of the same, you can do that. Next slide, please. And this is our upcoming webinar on 6th of September 2024 on the topic of the journey for quality excellence, KEZN, which would be given by the Dr. Saril, who is chairperson of CAHO Global Rehab Quality Forum of CAHO, the premium organization, the association. This is the QR code available on the screen. You all could scan and register yourself. Thank you so much. And thank you so much, Mr. Parminder, for this valuable insights. Thank you so much. Thanks. Everybody can sign off. Thank you, Mr. Parminder. Okay, thanks. Dr. Megha, this is Jyotsna from Transorze. Just want to thank you for giving Transorze a platform to talk about the importance of healthcare BPO and revenue cycle management. So really, we are proud to be associated with HSSC, and thank you so much for this great opportunity, which will really help the Indian youth to enhance their employability. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Jyotsna, for giving your hands to put up this webinar and conduct this webinar. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. And Thank you, madam. And Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Happy Thank you, Independence ma'am. Day in advance. Thank you.